now we will do the topic of missing frequency in the chapter mean. Now missing frequency means wherever there is a missing figure either in the individual series or in the discrete series or in the continuous series. मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके कहीं भी हो सकता है, अगर इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूअस सीरीज में. अब सपोज इंडिविजुअल सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, ओनली नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं. तो बाय चांस इफ सम सिंगल आइटम इज मिसिंग, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर ऑफ दैट particular series. Now let us take an example and explain this individual series to you all. Suppose I have taken an example, a series where x is given to you 10, 15, a question mark. Question mark means the third figure is missing here. Question mark 30 and 35. Now in the given question, suppose in the series out of 5 items, missing 1 is missing and the mean of the series is 30. Suppose in the series out of 5 items, 5 items है ना, 1, 2, 3, 4, 5. One of them is missing and the mean of the series given to you is 30. So find out the missing value. Now you need to find out the missing value. Now suppose इस जो missing value है इसको हमने a suppose किया है कि suppose this number is a. Now in order to find the missing mean of this missing value series, you either have to take any method, direct method, shortcut method or step deviation method. But it is better to use direct method in individual series. So the formula for the direct method of mean is sigma x or summation of x upon n. N means number of items and sigma x means summation of this series. तो summation x हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया, that is 10 plus 15 plus a plus 30 plus 35. So when we add this series, we are getting 90 plus a. So what is your sigma x? Sigma x is 90 plus a. Now let the formula be mean is equal to sigma x upon n. So that is equal to 90 plus a upon 5. Number of items given to you is 5. So 90 plus a upon 5. And the mean of the series given to you is 30. So 30 is equal to 90 plus a upon 5. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 into 5 is equal to 90 plus a. और 35 is 150 is equal to 90 plus a. अब a is equal to 150 से इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ या इसको राइट हैंड साइड में ले आओ तो 150 minus 90 a is equal to 60. In this way you will calculate the missing figure in the individual series. Understood students? Thank you. Now let us take a discrete series and find out the missing value. अभी हमने बात किया कि missing frequency can occur in all the 3 series, that is individual series, discrete series and continuous series. So let us take discrete series and find out the missing value. अब discrete series में you all know that 2 things are given to you. The first one will be x or the number of items and the frequency. The second one will be frequency, that is how many times that particular item is present in the series. So 2 things will be given to you in the question, that is x and f. Suppose the x is 5, 10, 25 and again there is a missing value which I have put it as question mark 25, 30 and your f is given to you 8, 4, 5, 10, 7, 6. Now the mean of the series is 19. The mean of the series is also given to you in the question, that is 19. Find out the missing value. You need to find out the missing value, that is this. So the first step of the missing value is let the missing value be a. Whatever thing you can suppose. Suppose you are आपने यहाँ पर a की जगह b लिया, c लिया, whatever you want you can suppose, but you have to suppose it with a letter, with an alphabet, not with a number. अगर आप नंबर से सपोज करेंगे तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक अल्फाबेट के थ्रू सपोज करेंगे इसको. लेट द मिसिंग वैल्यू बी a. So we can calculate the mean of discrete series with 3 particular methods that we have already done in the previous class, that is direct method, shortcut method or step deviation method. So here I am calculating the mean with the help of direct method. So what is the formula for the direct method of discrete series? That is mean is equal to
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. एफ एक्स का मतलब एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. So sigma f yani we have to do the total of this series. So if we sum it up, 8 plus 4 plus 5 plus 10 plus 7 plus 6, we are getting 40. So sigma f, that is summation of f, is equal to 40. Now you need to find fx. Fx means f into x. So 8 into 5 40, 4 into 10 40, 5 into 25 125, 10 into a. 10 into a will be 10a. 25 into 7 175, 30 into 6 180. Now you need to sum this fx. Summation of fx निकालना है. तो summation of fx में आप 10a का summation क्या करोगे, इसको आप अलग कर दोगे, इसको ऐड नहीं करोगे इस सीरीज में. 10a को ऐड नहीं करना है, इसको एज इट इज यहाँ पर प्लस 10a करके लिख देना है बच्चों. ओके, अंडरस्टूड. ये प्लस 10a को एज इट इज यहाँ पर लिख देना है, इसको ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर ही नहीं निकलेगा. तो इसको ऐड नहीं करना. बाद बाकी द रेस्ट, a के ऊपर हाथ लगा लो. द रेस्ट यू हैव टू ऐड इट अप, दैट इज 40 प्लस 125 प्लस 175 प्लस 180. So you are getting 560 as your answer. 560 as your answer. Plus ये जो 10a है, अब इसको यहाँ पर लिख लो. 10a will be written here. So the summation fx का जो summation है वो टोटल कितना आ रहा है, 560 plus 10a. Now put the values, all the values in the given formula. जो formula अभी हमने लिखा डायरेक्ट मेथड का, क्या formula है डायरेक्ट मेथड का डिस्क्रीट सीरीज में? mean is equal to sigma fx upon sigma f. Now mean of the series is already given to you in the question, that is 90. So mean of the series is 19. Sigma fx, summation of fx, you have calculated it, that is 560 plus 10a, and upon summation of f, वो भी आपने अभी calculate किया, that is 40. Now you have to do cross multiplication. Cross multiplication means 90 into 40 is equal to 560 plus 10a. Now here we have one variable, और इसमें वेरिएबल नहीं है तो इनको ऐड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. कभी भी इनको ऐड मत करना, क्योंकि अगर आप इनको ऐड कर दोगे फिर आंसर नहीं आएगा. ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल पोर्शन को अलग से ही रखना है, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, a. At the last we need to get the value of a. So इस 10a को we have to keep it separately. Now 19 into 40 is equal to 760. 19 into 40 is equal to 760. और ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपका 560 था, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाके क्या होता है, पॉजिटिव साइन था 560 का, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव हो जाएगा. तो 760 माइनस 560 इज इक्वल टू, ये जो 10a आपका राइट हैंड साइड में था, इसको राइट हैंड साइड में ही रखना है, इक्वल टू 10a. नाउ व्हेन वी सबट्रैक्ट इट, वी आर गेटिंग 200. In the right hand side, in the left hand side, what we are getting, 760 minus 560 is equal to 200. Adding the right hand side, 10a already present है. अब इस 10a को इधर right hand side में लियो, इसको उल्टा लियो, दोनों को exchange कर दो. Then a will be is equal to 200 upon 10, 0 0 cancel. तो value of a is 20. Understood student? यहाँ पर मैंने direct method use किया है, आप कोई भी method use कर सकते हो. बट easiest will be to calculate it through the direct method. तो आप क्या है, value of a easily निकाल सकोगे. Okay students?